So now I'm going to discuss the next important binary tree, that is binary search tree, and in short we say it as BST. So binary search tree or BST is a special kind of binary tree in which the nodes are arranged in a specific order, and all the nodes they follow this property. That means only smaller values is in its left subtree. Okay, you take any node, in each node, okay, it contains only smaller values in its left subtree and only larger or equal values in its right subtree. In other words, the value of all the nodes in the left subtree is less than the value of the root node, and the value of all the nodes in the right subtree is greater than or equal to the value of the root node. Okay, so in this type of tree, in this type tree, binary search tree, all the nodes in the right subtree, the value of all the nodes in the right subtree, okay, it is larger than the root node, and the value of all the nodes in the left subtree is less than the root node. For example, you see, this is a binary search tree. Now you see here, I told you that in binary search tree, the value of all the nodes in the right subtree is larger than the root node, and the values of all the nodes in the left subtree is less than the root node. You see here, this is the root node and the value of this node is 25. Now see, all the node values, this is the right subtree. This is the right subtree. All the values, see, all the values here is larger than this 25. Okay, at all the nodes. This property is satisfied at all the nodes. Now you take this one. If you consider this node as the root node, you see 36 is the value. Now all the values in its right subtree is larger than 36. You see, you come here, 40 is larger than this. Okay, and you see 38, 48, these are also larger than 36. If you consider this 40 as the root node, then you see all the values of the nodes in the right subtree is larger value. See, 48 is the right in the right subtree, so this is larger than 40. And all the values of the nodes in the left subtree is less than the root value. See, if you consider this node, 40 is the root node, then its left subtree is this one. So here is 38 is less than 40. Similarly, you see here, if you consider this 36 as the root node, so in the left hand side you see 30 is less than 36, 28 is also less than 36. Similarly, here you consider this, if you consider this root node 25, you see in the left subtree you take any node, all the values are less than 25, 20, 22, 10, 12, 5, all are less than 25. If you consider this one 20 as the root node, okay, of this subtree, now you see all the nodes here in the left hand side, in the left subtree, see all the values of the nodes here less than 12, see, less than 20, see 10, 5, 12, all are less than 20. Similarly, the value of all the nodes in the right subtree of this root node is larger than this value, see 22, this is larger than this. Okay, so this property is satisfied in all the root nodes in this tree. Okay, so in a binary search tree, the value of all the nodes in the right subtree is larger than the value of the root node, and the value of all the nodes in the left subtree is less than the root node, and this property is satisfied for all the nodes, all the root nodes in a tree. Okay, is that clear? This is a Yes, sir. binary tree. First of all, it is a binary tree. Okay, and then it satisfies these two properties. This binary search tree, it is a binary tree. Okay, which satisfies these two properties. That means all the values in the right subtree is larger than the root node, and the values of left subtree is less than the root node. These two properties is satisfied in every node of the binary tree. This is known as binary search tree. In short, we say it as BST. Okay.
Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, advantages of using binary search tree. Searching in binary search tree is very efficient because of its property. Okay, and searching for an element in a binary search tree takes big of log n time, and the worst case time for searching is big of n. Okay, but best case is big of log n, log base 2n. Insertion and deletion operation is faster in binary search tree as compared to array and linked list. Okay, now we will discuss construction of binary search tree using the data elements. So you will be given the data elements or the nodes will be given, and you will be asked to construct a binary search tree. Now how to construct? So see carefully here. So here these are the data elements given. Now we will construct the binary search tree using these nodes. Okay, and we will use the property of binary search tree to construct it. Okay, so these are the steps. So you have to start from the left hand side. You have to start from the left hand side. From the left to right, you have to scan all these values. Okay. The first value is the root node. Okay. This first value is always is the root node of the tree. You have to traverse these elements from left to right. You have to scan these elements from left to right. The first element of this, the first one in this data is the root node. Okay. So we'll start from the left. So what is which one is the first value? 43. 43. 43 is the first value, so it will be the root node of the tree, binary search tree. Okay. Then we will again scan the next value will take. Okay. And after taking the next value, we will apply the binary search tree property. So we will compare that value with this root node value. Okay. If that value is larger than this value, then that value will be the root node of the right subtree. We have to insert that node as the root node of the right subtree. And if that value, the next value is less than this root value, then that value, that node value will be the root node in the left subtree. So you have to construct this way, and this will be followed recursively for all the subtrees, for all the nodes, for all the values. Okay. So first we took this one 43, so it is the root node of the binary search tree. Then next we'll take this one 10. Now compare 10 with this 43. So 10 is less than 43 or greater than 43? So Less than less than. 43. So this 10 will be the root node in the left subtree. So we have to add here. You see it is added here. 10 is added. 10 is the now the left child of this 43. Okay, that means 10 is the root node of the left subtree, because we will construct here subtree now further. Left subtree, right subtree will construct. But this 10 is the root node of this left subtree now. Okay. So this is okay. Now again you take the next value from left to right. Next value is 79. Now you compare this 79 again. Start from the root node. So compare here. So the 79 is greater than 43 or less than 43? You have to start from the root node. Okay, compare this value 79. So 79 is So greater than greater. 43. So you have to make it as the root node in the right subtree. So that means you have to insert here. Okay, this is the right child of this 43. Okay, so this is the root node of the rights in the right subtree. So 40, 79 you inserted here. Okay, 79 complete. Now next which number? Next 90. Now again compare 90 here with the root node. Okay, so 90 is greater than 43 or less than 43? Greater Greater. than 43. Greater than 43. So come to the right subtree. We are coming here. See, come to right subtree. Again you compare with the next root here in this subtree. So next root is 79. So compare 90 with 79. So 90 is greater than 79 or less than 79? Greater than 79. So you have to insert it in the right subtree. So you see inserted here.
90. 90 is the root node in the right subtree. Okay, so 90 is complete. The next is which value? 12. So now 12, you again compare 12 here with 43. We'll always start from the root node. Okay, so compare 12 with the 43. So 12 is less than 43 or greater than 43? It is less than 43. So come to the left subtree. Now again compare with the next root. So next root is 10. So compare 12 with 10. So 12 is less than 10 or greater than 10. 12 is greater than 10. So 12 will be in the right subtree of this 10. So we have to add here. See, it is added here in the step 5. Okay. Then again go to the next element. So 54. Now take 54 and compare here with the 43. Okay. Now 54 is greater than 43. So come to the right subtree. Again compare with this root node. 54 is greater than 79 or less than 79. It is less than 79. So you have to come to the left subtree. So there is no left subtree. So you have to insert here as the left child. So it is inserted here. See, 54. Step 6 complete. Okay. Then in step 7, take the next value 11. Okay. So start here. Compare with 43. So less than 43. 11 less than 43. Come here. Compare with the next root node 10. So 11 is greater than 10. Come here. Compare with this 12. So 11 is less than 12. So you have to insert in the left subtree here. So it is inserted here left. Okay. So step 7 is complete. Now next take this value 9. Okay. So 9 again you compare here with 43 less than 43. Next compare with this 10 greater than 10. Sorry, less than 10. So you insert it will be inserted here. You see it inserted here. Okay. Then next element is 50. It is the last element. So compare with 50. 43 the root node compared it is greater than 43. Come here. Now compare with 79. Okay. So it is less than 79. So you have to come here. Now again compare with 54. So it is less than 54. So it will be inserted here at the left subtree. So you see it is inserted here left subtree. Okay. Is that clear, students? Hmm? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Any Sir, question in if this? there is a there is Tell. two same number, then what will happen? So same number will not come because in binary search tree, uh, same number there is no same number. The two no cannot have same key. And even if it comes, then you insert in the go to the right subtree. क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है इसका क्या बोल रहा है only larger or equal values in the right subtree. ठीक है समझ में Yes, sir. सेम आएगा तो राइट में घुसा दो ठीक है राइट में इंसर्ट कर दो लेकिन सेम नहीं आएगा ठीक है ओके Yes, sir. समझ में आया Yes, sir. now a binary search tree is generated by inserting yes. A binary search tree is generated by inserting in order of the following integers ठीक है so these data items are given okay now the question and the binary tree is constructed by using these data items. Now it is asked that the number of nodes in the left subtree and the right subtree of the root node respectively is which option is the answer. Can you solve this? Hello. Can you solve this or not? Tell me students, can you solve this or not? Yes, sir. How to solve this? You have to first construct the binary search tree using these data elements, okay? And then you have to find the number of nodes in the left subtree of the root node and number of nodes in the right subtree. You have to just count the number of nodes. Then you have to take the answer. Okay? Is that clear? You solve this question at home. Okay. सर 7 4 होगा क्या? I don't know. I don't. I have not calculated. You calculate. जो भी होगा, ठीक है ना? Okay. This is question for you.
maybe 7 4. Okay, I have not calculated. See, to find the answer to this question, you have to first construct this binary tree. Okay, binary search tree. After that, सर you can find. 50 सर 50 होगा रूट नोड, उसके हाँ बाद 50 से जो मतलब उसका लेस वैल्यू जितना रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा। हाँ तो सर 15 होगा, एक 5 23 8 37 और 24। हाँ, कितना हुआ? सर 7 हुआ। हाँ ठीक है, दैट्स द आंसर. Okay. यस सर। The next is BST traversal, traversal of binary search tree. Okay, so this traversal of binary search tree is exactly the same as traversing binary tree. Okay, बाइनरी ट्री को जैसे ट्रावर्स कर रहे थे उसका निकाल रहे थे ट्रावर्सल. Three types of traversal are there: pre-order traversal, in-order traversal and post-order traversal. Okay, तो जैसे बाइनरी ट्री का ट्रावर्सल निकालते थे वैसे ही यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंस नहीं. समझ में? यस सर। हेलो, Yes, sir. यस समझ सर। में आया कि नहीं? ओके, सो हियर यू सी this tree is given and we have to find the pre-order, in-order and post-order traversal of this tree. Okay, so first let's find pre-order traversal. So pre-order traversal में क्या होता है बोलो, उसका सीक्वेंस क्या है pre-order का? सर रूट लेफ्ट राइट। यस, रूट लेफ्ट राइट. ओके, सो इसमें देखो रूट कौन सा है? 100. First root is 100, so 100 is written. Okay, then come to the left subtree, and while coming to the left subtree, again you take this root, so 20 is written. Now again come to the next left, left, so this is the root node और उसका left right कुछ नहीं है, so 10 लिख के. ओके, अब ये लेफ्ट खत्म हो गया, ये रूट भी खत्म हो गया. ठीक है, रूट लेफ्ट खत्म, अब राइट 30, इसका 30 लिख दिए. अच्छा, ये खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया. अभी क्या करना है? हाँ, ये पूरा खत्म हो गया लेफ्ट, रूट तो खत्म कर चुके हैं. ठीक है ना, अब किधर जाना है? राइट में आना है. जब राइट में आ रहे हैं, राइट में आते वक्त फिर से रूट मिल गया, 20 रूट, 200 रूट, 200 लिख दिए. फिर इसमें इसका लेफ्ट 150 लिख दिए, इसका राइट 300 लिख दिए. ओके, सो दिस इज प्री ऑर्डर ट्रावर्सल. ओके, सेम एज वी फाउंड इन द बाइनरी ट्री. ओके, एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल इसका क्या है बताओ? सर इससे लेफ्ट कौन सा ऑर्डर? सर लेफ्ट रूट राइट। यस, लेफ्ट रूट राइट. सो उसको अप्लाई करके ये निकला है ये हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल. ओके, देन पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल. लेफ्ट क्या राइट ऑर्डर है रूट। पोस्ट ऑर्डर Left, ट्रावर्सल? right road. लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट. ओके, सो उसको यूज करके ये वाला निकला है देखो, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल. Okay, so it is same as the binary tree. Okay, but there are some important points to remember here in this binary search tree. In order traversal of a binary search tree always yields all the nodes in increasing order. You have to remember this point. When you find the in order traversal of a binary search tree, the nodes in the traversal will be in the increasing order of values. You see, this is the property of binary search tree. When you traverse and print the values, okay, of a binary search tree in order, then the values will be in the increasing order, in the in order traversal. So you see, this is the in order traversal for this binary tree. You see, all the nodes are in increasing order. See, 10, 20, 30, 100, 150, 200, and 300. So it is in increasing order. Yes or no? Okay, you remember this point. Yes, sir. Okay, so for this reason you can construct
a binary search tree for a given pre-order traversal or for a given only post-order traversal? Can you tell it or? And if you can do, why? Because only one traversal will be given to you. Either pre-order traversal or post-order traversal will be given to you, and you will be asked to construct a binary search tree. See, the construction of binary search tree is same as the construction of binary tree. जैसे वहां पर कंस्ट्रक्ट करते थे वैसे यहाँ कंस्ट्रक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर इस केस में बाइनरी सर्च ट्री में क्या है कि तुम्हें दो ट्रावर्सल नहीं देगा। जैसे तुम्हें बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने घड़ी तुम्हें यू आर गिवन प्री ऑर्डर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, so you are given two traversals and then you सर आपका वॉइस कट रहा है थोड़ा थोड़ा। नॉट हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री में तुम्हें दोनों मतलब प्री ऑर्डर इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर या ऐसे करके नहीं देगा, तुम्हें एक ही ट्रावर्सल का वैल्यू देगा, आइदर प्री ऑर्डर देगा या पोस्ट ऑर्डर देगा, और तुम्हें पूछेगा कि ट्री कंस्ट्रक्ट करो, तो तुम निकाल सकते हो। क्योंकि इन ऑर्डर तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, क्योंकि जो भी दिया होगा प्री ऑर्डर में या पोस्ट ऑर्डर में वैल्यू, उसको तुम असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, सो दैट विल बी दी इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अब तुम्हें दो मिल गया है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। अगर तुम्हें खाली प्री ऑर्डर दिया है या तो फिर पोस्ट ऑर्डर दिया है तो तुम आराम से ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन ऑर्डर निकाल सकते हो तुम उसी से, प्री ऑर्डर से या पोस्ट ऑर्डर से जो भी दिया होगा उससे तुम निकाल सकते हो इन ऑर्डर ट्रावर्सल। कैसे निकालोगे बताओ इन ऑर्डर ट्रावर्सल? मान लो तुम्हें प्री ऑर्डर दिया, कैसे निकालोगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल बताओ? सर ट्री पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। विदाउट कंस्ट्रक्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। हाँ, जो मान लो तुम्हें खाली प्री ऑर्डर दिया है, तुम कैसे ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे बाइनरी सर्च ट्री? एक ही खाली दिया है प्री ऑर्डर, कैसे करोगे बताओ? हाँ सर, जो पहला होगा मतलब जो फर्स्ट वैल्यू दिया होगा वो रूट नोड होगा। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें खाली एक ही ट्रावर्सल देने से तुम ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या बाइनरी ट्री? नहीं सर, बाइनरी ट्री नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो मैं बोल रहा हूँ बाइनरी सर्च ट्री तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नॉर्मल बाइनरी ट्री नहीं कर सकते, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री कर सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे करोगे भी मैंने तुमको बताया अभी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो तुम्हें खाली प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया गया है, किसका? बीएसटी का। बीएसटी का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल तुम्हें दिया गया है और तुम्हें पूछा जा रहा है कि ट्री को कंस्ट्रक्ट करो, बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करो, तो कैसे करोगे बताओ मुझे? सर ऑर्डर पहले निकाल लेंगे सर। 100 पहले जो फर्स्ट हाँ वैल्यू होगा वो नोड होगा उसका। हाँ, फिर उसके बाद सर हम फिर कंपेयर करेंगे कि 20 और जो 200 है, कौन अगर जो लेस होगा वो उसका लेफ्ट साइड में रहेगा और जो बड़ा होगा वो राइट साइड में रहेगा। तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि खाली प्री ऑर्डर दिया है, खाली प्री ऑर्डर में से तुम ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या? बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? नहीं सर। नो सर। नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें इन ऑर्डर भी चाहिए। यस हेलो, सर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इन ऑर्डर निकाल लेंगे। हाँ, तुम्हें पहले इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना पड़ेगा, उसके बाद तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो पहले तुम्हें इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना पड़ेगा गिवन प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो इन ऑर्डर कैसे निकालोगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। हाँ, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, हो गया तुम्हारा इन ऑर्डर। तो अभी तुम्हारे पास दो हो गए, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दोनों है, तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है ना। बाइनरी सर्च ट्री का यही एक प्रॉपर्टी है कि तुम्हें अगर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया है या तो फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल दिया है,
उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, वो हो जाएगा तुम्हारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास 2 हो गए, 2 हो जाने से तुम कर सकते हो, प्री इन देने से कर सकते हो या पोस्ट इन देने से कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया? यस सर। Okay. Now this is the question: construct a BST using pre-order traversal. Okay. So BST using following pre-order traversal. So these are the node values. Can you construct the BST using this data only? यस सर। yes कैसे sir. करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ? सर इन ऑर्डर ट्रावर्सल पहले उसका लिख लेंगे। हाँ, इन ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे निकालोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हाँ है। बताओ बताओ, इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या सर बताओ? 10 20 30, हाँ उसके बाद 100 150 200 300। यस, तो इन ऑर्डर निकल गया और प्री ऑर्डर तो दिया ही है, प्री ऑर्डर उसका तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर निकल गया, अब बीएसटी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जैसे बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करते थे वैसे ही करोगे, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम। ओके, सो दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री। ओके, कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अब इसको कैसे बनाओगे, कंस्ट्रक्ट करोगे बताओ, बोलो। पहले इसका क्या करोगे? इन ऑर्डर निकालिए। इन ऑर्डर निकालोगे, कैसे निकालोगे? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, लिखने से नहीं, इसका इन ऑर्डर निकल गया, ठीक है ना, और पोस्ट ऑर्डर तो दिया है, पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दोनों हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब तुम घर में करना, ऑल दीज आर होमवर्क फॉर यू, ओके, ऑल दीज क्वेश्चंस इज होमवर्क फॉर यू, डू दिस एट होम, ओके, दिस द आंसर। नाउ one more question: suppose the number 7518360942 are inserted in that order into initially empty binary search tree. The binary search tree uses the usual ordering of natural numbers. Now what is the in order traversal sequence of the resultant tree? Tell me. सी होगा। Yes, answer is C. Why? You just have to arrange this in increasing order, ascending order, okay, so that will be the in order traversal. So this is the answer, okay, very easy. For this you need not to construct the binary tree, just arrange this in increasing order, these values, so that is the in order traversal, okay, okay. The next question: the pre-order traversal sequence of a binary search tree is this, okay. Which one of the following is the post order traversal sequence of the same tree? ये कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? तो ट्री क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें ट्री क्रिएट करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो ट्री कैसे क्रिएट करोगे बताओ? इन ऑर्डर निकाल के फिर इन ऑर्डर इसमें से- निकालना पहले इन ऑर्डर निकालो और प्री ऑर्डर तो ये है ही, तो उन दोनों को यूज करके ट्री कंस्ट्रक्ट करो, उसके बाद उसका निकालना है, पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है।